Hello everyone, a very warm welcome to today's session and as you all know कि आज से हम एक gut reset program start करने वाले हैं for the first few days and after the gut reset program we'll further move on to the intensive phase and then the maintenance phase. तो आज हम gut reset program में कुछ ऐसे movements को सीखेंगे, कुछ ऐसे आसन को सीखेंगे जो help करेंगे आपकी gut health को maintain करने। तो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड। ये बहुत ही सिंपल मूव्स हैं। इनफैक्ट हमने प्रोग्राम इस तरह से डिजाइन किया है कि एज अ बिगनर आप इसको बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। सो जो भी हम आसन करेंगे, जो भी हम मूवमेंट्स करेंगे, उसमें हम आपको अच्छे से वेरिएशंस देंगे विच विल एंश्योर कि आप जो भी मूवमेंट्स कर रहे हैं वो बिल्कुल सेफ एंड इंजरी फ्री हो आपके लिए। बट स्टिल अगर कोई भी एक ऐसी मूवमेंट है जिसको करते हुए आप पे बहुत प्रेशर लग रहा है आपको, या बहुत खिंचाव लग रहा है, या ऐसा लग रहा है कि मुश्किल हो रहा है, तो यू कैन टेक इट स्लो। आप इंस्टेड ऑफ पुटिंग लॉट ऑफ प्रेशर आप धीरे धीरे उस मूवमेंट को कर सकते हैं। इनफैक्ट जो रेंज होगा वो उतना ही रखिएगा जितना आपको कंफर्टेबल। तो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम गट रीसेट के लिए जो आसन करते हैं वो है वज्रासन और थंडर बोल्ट पोज। लेकिन बहुत सारे लोगों को इसको करते हुए थोड़ा काफ्स में या नीज में पेन होता है, तो इसका एक हैक है जो मैं आपको दूंगी और उसके साथ हम वज्रासन से स्टार्ट। तो वज्रासन करने के लिए आप एक कुशन को अपने काफ्स के ऊपर, एग्जैक्टली काफ्स के ऊपर स्क्वीज कर लीजिए। ये बहुत सिंपल सा पतला कुशन है, बट आप एक अच्छे से हेल्दी कुशन को, मतलब जो थोड़ा चौड़ा भी है और थोड़ा मोटा भी है, उस तरह से आप स्क्वीज कर सकते हैं। एंड अपने बम्स को अपनी हील्स के ऊपर रखेंगे। प्लेसमेंट हैज टू बी सच कि आपके बम्स आपकी हील्स के ऊपर रहेंगे। आप अपनी नाभि को पूरा अंदर की तरफ खींच के रखेंगे और हाथों को घुटनों पे रखेंगे। हाथों को घुटनों पे इस तरह से नहीं रखेंगे कि आगे की तरफ खींचा हुआ है, बट इस तरह से रखेंगे कि आप अपने शोल्डर्स को भी रोल बैक कर सके, आपकी चेस्ट भी लिफ्टेड रहे और आपकी नेवल अच्छे से स्क्वीज रहे। अब अपने दोनों हाथों को रखेंगे यहाँ पर लंबी गहरी सांस के साथ। इसमें लंबी गहरी सांस का क्या मतलब और लंबी गहरी सांस कैसे लेनी है, जैसे आप इनहेल करते हैं तो फील कीजिए कि वो जो आप इनहेल करके ऑक्सीजन आपके अंदर लेकर जा रहे हैं वो आपके बेली तक, मतलब इनहेल कीजिए तो ये जो आपकी बेली है ये हल्की सी फूलनी चाहिए, मतलब इट हैज टू बी लिटिल इंटेंसिव एज अ ब्रेथ। एक होता है कि हम नॉर्मली इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, और वो हमें अपने कंटिन्यूअस रूटीन में कर रहे हैं। एक होगा कि आप कॉन्शियसली इनहेल कर रहे हैं, इनहेल करते हुए थोड़ा सा शोल्डर्स को रोल बैक कीजिए अपनी। You're gonna keep your chest lifted, your shoulders rolled back, and your core engaged all the time. So what needs to happen is when you are engaging your core, we also call it diaphragmatic breathing. So what is diaphragmatic breathing? When you'll exhale, first is inhale. You're gonna inhale, and as you inhale, your core will expand. And now, as you exhale, you will tuck your belly in first. And after tucking it in, you're going to squeeze it up. So first is navel in and then is up. So in and up. So it's almost like a curve which you create. And you put little pressure on your diaphragms here for the full exhale. So that's what we call diaphragmatic breathing. It's an amazing way to keep your entire gut health healthy, plus to give nice support to your spine. So what exactly happens is we feel as if our spine and our core muscles are separate. मतलब हमारी रीढ़ की हड्डी और हमारे कोर की जो मसल्स हैं, मतलब कोर की मसल्स का मतलब ये नहीं होता कि आपने जो स्टमक है उसको फोटो खींचते हुए स्क्वीज कर लिया, सांस भी रोक लिया। कोर वो सारा मसल ग्रुप है, मतलब राइट बिलो योर चेस्ट टू योर पेल्विस, ये जितने भी मसल्स है ना, इनफैक्ट यहाँ तक कि आपके टेल बोन के पास, आपके सिक्स बोन्स के पास जितने भी ये मसल ग्रुप है जो आपकी स्पाइन को सपोर्ट कर रहा है, that is a part of your core muscle. Okay, so as long as you know that your core muscles and your spine are holding together,
Like, you're supporting your spine nice and together with the core muscles, it's great. But जैसे ही आपको ये feel आती है कि ये separate है and your spine is separate and you're not engaging your core muscles and you're sitting like this. So you have drooped shoulders. I cannot droop any further, but you will have drooped shoulders. Your chest is also caved in. Your core is also fallen over. So you're crowding out all your organs. Is it possible for you all to keep your cameras on? Because we are starting our journey today and I really want to see you all doing it. Because the plan has to be such that I design it every day in line with your progressions. So if I'm not able to see anyone, I'll not be able to, understand that how and the way you are doing the moves. So I'll please, request you all to keep the cameras on. So if I see a lot of people not able to do Vajrasana, then I'll shift to something else. Okay, great. So after you tuck in the core, making sure that all your core muscles are engaged and you're not just falling forward. The idea is to keep your navel tucked in, squeeze all your muscle group. Now this exact thing you will not do only when you are thinking that, oh, I'm exercising, so let me get into that. Absolutely not. This has to be your form throughout the day. Wherever you're walking, you're talking, you're sitting, make sure that your core muscles are nicely squeezed in and they are giving support to your spine throughout. Okay, so this is like the first pose, which is thunderbolt pose. हम इसे वज्रासन कहते हैं और इस आसन में होता है. So what exactly happens is that the blood flow to your entire endocrine region increases. Okay, so this is one such pose or one such asana which you can do right after your meals. Yes, so we generally give a disclaimer in all the asanas saying that, okay, if you are actually have had your food literally in an hour, so try avoid doing exercises, try not doing any of the movements, because there is a logic behind that your blood flow tends to go towards the process you're doing. So if you just had food, then your body is using it for digestion, and then on a heavy stomach, if you start working out, so neither you are able to divert your energies right for the workout because your food is still undigested and sitting there, and you're not even able to do the digestion properly, because then half of the energy will start going towards your workouts. Okay, so yes, post your meals you can take a slight walk, which we call stroll. मतलब धीरे से at ease walk कीजिए जो आपके digestion को aid करे, but हाँ बिल्कुल भी heavy workouts नहीं करेंगे right after your meals. वज्रासन आप कर सकते हैं right after. वज्रासन के बाद हम आगे चलेंगे power cat pose. आप अपने knees को right under your hips रखेंगे, अपने hands को right under your shoulders. Okay, your navel is nicely squeezed. आपकी जो नाभि है वो पूरी squeezed है. So आप कैसे feel करेंगे? आप इसको इस तरह से feel करेंगे जैसे आपकी नाभि है वो आपके spine से connected है और आपके spine से ऊपर और नीचे जाए. मतलब इसका मतलब ये है कि cat and cow pose करते हुए आप अपने chest से movement को नहीं करेंगे. आप movement कहाँ से करेंगे? आपकी मूवमेंट होगी आपकी पेल्विस से, आपके पेल्विक फ्लोर मसल से, आपके कोर मसल से योर मूवमेंट हैज टू हैपन. आप अपने हैंड्स को मूव नहीं करेंगे. योर हैंड्स विल बी नाइस एंड टॉल ऑल द टाइम राइट अंडर योर शोल्डर्स. एकदम से फर्स्ट मूव में बहुत ज्यादा खिंचाव के साथ ऊपर नहीं जाएंगे. लाइक आई सेड, मेक श्योर दैट स्टार्टिंग विद योर वर्कआउट्स इट ऑल हैव टू बी स्लो एंड स्टेडी. द होल आइडिया इज टू स्टे कंसिस्टेंट. Will not kill it all on day one, but yeah, we'll slowly build on it every day. So keep your knees right under your hips, your palms right under your shoulders. A nice deep inhale and start lengthening from here. Stretch if you feel comfortable, and then you'll slightly look up. Again, lift the movement from the core muscles. And then as you exhale, tap the navel in, squeeze, lift up. Feel as if there is a thread which is tied here.
and the thread is being pulled up. Again, inhale. Lengthen your spine. And look up. Exhale. Navel tucked in, squeeze and lift. Feel as if there is a thread which is tight, okay, and this thread is pulling you up to the ceiling. That's how you're gonna squeeze. And one last time. Inhale up. So I'm looking at your side, so I'm turning around here. You'll all keep looking up to the ceiling. And then as you exhale, you're gonna tap that chin to the chest. Tap the chin to the chest, lengthen that spine. Navel tucked in. And then relax. Again, the next pose we're going to do now is a child pose. It's a very simple pose, and in fact, it's not a very active pose. It's a relaxing and a restorative pose. So again, it will help with calming down your whole system. It will help you get stress-free, increases the blood flow to your brain. So in an overall environment, it helps to cool down and calm down your digestive system and helps to get your activity into, so the navel is tucked in. Again, anybody who has a pain around their knees or feel uncomfortable with the fact that your knees are touching the mat, please keep extra cushioning right under your knees. Number one. And when we go back, then also you can keep an extra cushioning like a boulder or an extra cushion here. So both the places your movement has to be supported. Everyone try to make these simple props ready around your workout areas so that we will be able to use them every day. Okay, and you don't have to like rush and pick them up. So one long or a big boulder for under your knees and one for here, because we will keep doing some of these poses throughout. If not like a workout, but yes, then definitely in our. So here, the idea is to go back and again, bring your bumps over your heels. Just the way we did in the Vajrasana, your bumps over your heels. But what is the difference here is we're going to bring that chest to the mat. Like I said, it's a relaxing pose. And if somebody realizes that you are not able to go down with your feet connected, it will become easy if you open your feet out. Yeah, bring your feet out and then slide it. Easy. And then slide down to the mat. So the idea is bring your entire chest down and forehead down. But it's perfectly fine if you realize that you're not able to go here all the way down. Again, keep some kind of a support system here. It has to be cushion, a pillow, anything which can give you support here. So something which is supporting you here, you are holding it here. Yeah. So do you see what is happening here? Number one, you have a length in your spine. Right from the tailbone, you are lengthening your spine out, squeezing your core muscles. And as you bend over and stretch, the blood flow to your brain increases here. Hold this here for a while. Inhale in. And exhale out. Inhale in. And exhale out. From the child pose, we go into a thread and the middle pose. Again, it's a very beautiful pose and a simple pose which will help you to lengthen and stretch your spine along with the shoulders as well. So, the whole day of that forward bending and working on the screens, this is one must do pose. So what you'll do again is your hands right under your shoulders. As you inhale, you're going to squeeze the palm in like a thread. Yeah. So thread going in the middle hole and then squeeze up. Thread going in the middle hole and then squeeze up. See how far you can lengthen and stretch. See how far you can lengthen and stretch.
hold it here, squeeze. And if you realize you're not able to lift your hands up, it's perfectly fine. See how far, you can just keep it here also. But if you can lengthen it, just lengthen it all out. So navel tucked in, core squeezed and lengthened. From the hips to the knee will be a straight line, but your knee shouldn't have any pressure of holding you up. Bring all the pressure right from your core. Again, back to the center. As you inhale, you're going to slide down, and as you exhale, you're going to open up. Try holding on to all the positions for like 20 to 30 seconds. It will give you a good time to breathe in and breathe out. Yeah. So inhale, in, and then as you exhale, you're going to lengthen up. Hold and then slowly come back. So we'll start with our next pose, which you cannot miss when you are talking about the gut health. Okay? But few warm-up poses or few prep poses which we'll do before walking into Ardha Matsyenasana. Sit nice and tall in Sukhasana. Keep your palms right over the knees. Lengthen your spine. As you inhale, you take a deep breath. And then as you exhale, you're going to just stretch to the side. Now, when you stretch to the side, make sure that your chest is open, lifted, and you are parallel to your side. Again, inhale, center, exhale to the side. And when you are moving to the side, you are not moving from the shoulders, you are moving from the core. So there is the movement which is happening. Okay, so that's why hands to the knees. आप अपने हाथों को अपने घुटनों पे रखेंगे so that you ensure कि जो आपकी movement हो रही है वो आप shoulder से pull करके नहीं जा रहे. You are actually tucking your core in, and like I said, inhale and exhale right to the core muscles. So as you tuck your core in and exhale to this side, now you're gonna squeeze your core muscles. अपने जितने भी नाभि के आसपास के जो muscles हैं, उन सभी muscles को अच्छे से squeeze करेंगे. आप पूरा का पूरा साइड पे स्ट्रेच करें. बैक टू द सेंटर, फिर साइड में स्ट्रेच एंड स्क्वीज. लेंथन करेंगे अपनी स्पाइन को अच्छे से. अगेन बैक टू द सेंटर. वन लास्ट टाइम. इस बार आप अपने शोल्डर के ऊपर से अपने आप को पीछे देखने की कोशिश करिए, लाइक अ फुल 180 डिग्री टर्न. बट अगर किसी को भी फ्रोजन शोल्डर्स है या कुछ भी सर्वाइकल स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो प्लीज अपने कंफर्टेबल जोन में रहिएगा. बहुत ज्यादा पुश मत कीजिए. स्लोली एंड स्टेडीली विल डू सो मेनी मूवमेंट्स जो आप रियलाइज करेंगे कि आपके ओवरऑल स्पाइन को स्ट्रेंथन करते हैं. आफ्टर स्ट्रेंथनिंग ऑफ योर स्पाइन वी कैन स्लोली ऐड. Okay, so inhale, hold, squeeze, exhale, and then look over the shoulder back. Again, inhale, hold, squeeze, exhale, look over the shoulder. Good. So your shoulders have to be rolled back. Make sure कि आप पीछे देखने के लिए हंच करते हुए ऐसे करके नहीं जाएंगे जस्ट बिकॉज कि मुझे पीछे देखना है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अगर आपको ऐसा लगता है कि पीछे की मूवमेंट नहीं हो रही है, आप सिर्फ यहाँ तक की भी मूवमेंट कर सकते हैं. एंड आइडियली जब तक शोल्डर्स रोल्ड बैक एंड चेस्ट लिफ्टेड है, ये मूवमेंट भी आपको हेल्प करे. लेकिन जस्ट फॉर द आइडिया ऑफ रीचिंग देयर ऐसे करके बिल्कुल भी मूव नहीं करें. डू नॉट स्क्रंच अप योर शोल्डर्स.
they will always be rested back. That's why the hands to the knees, आप अपने घुटने भी ऊपर उठाएंगे नहीं, अच्छे से रिलैक्स रखिए. That's why I said सुखासन में बैठिए, no worries. Yeah? And then and back. So आज हम अर्धमसलन आसन का भी ब्रेक पोज करेंगे, which is like a वक्रासन और a preparatory pose. आप अपने दोनों लेग्स को सीधा करके बैठ जाइए और जिस तरह से हमने ट्विस्ट किया था फ्रॉम द कोर, हम वही करेंगे. इनहेल, लिफ्ट योर लेग. आप देखिए ये पूरी की पूरी जो लेग है आपकी, ये कोर आपके पूरे एंडोक्राइन सिस्टम में प्रेस्ड रहेगी. आप इस तरह से स्क्वीज कीजिए कि ऐसा लगे कि आप सीधे बैठे. मतलब ये जो आपके शोल्डर्स है वो आपके साइड वॉल पे इस तरह से पैरेलल होने चाहिए जैसे आप सीधे बैठे. आइडियली आई एम सिटिंग हियर. या सो आई एम स्क्वीजिंग, ट्विस्टिंग, लिफ्टिंग एंड होल्डिंग. ठीक है, आप जहां तक होल्डिंग का पार्ट है, अगेन जरूरी नहीं है कि बहुत ही ज्यादा अपने आप को होल्ड करके ऐसे करके होल्ड करना है. एज लॉन्ग एज यू सिटिंग टॉल, आपके शोल्डर्स लिफ्टेड है, चेस्ट ओपन है, पाम्स आउट है, आप आराम से इस तरह से भी इस पोज को कर सकते. मतलब आपने पूरा का पूरा जो आपका ये थाइज है अपने कोर सिस्टम में पुश. अगर आपके लिए कन्वीनियंट है और ये आपका दूसरा लेग ही नहीं आएगा, मेक श्योर ये अच्छे से नीचे ही रहेगा. अगर ये कंफर्टेबल है तब आप अपने नीज को प्रेस करते हुए ऑपोजिट नी को पकड़ें और एक्सेल करते हुए शोल्डर्स के ऊपर से, जैसे हमने पिछली बार किया था, शोल्डर के ऊपर से पीछे की तरफ. सो कहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर है और क्या करता है ये आसन? इट किक स्टार्ट्स योर एंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम. इनफैक्ट अभी इसको करते हुए आपको ऐसा फील हुआ होगा कि गैस रिलीज हो गई, बर्प आ गया, मतलब डकार आ गया, गैस रिलीज हो गई. इस तरह से ये आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को किक स्टार्ट करता है. तो अगर आपको एसिडिटी, ब्लोटिंग, इन सब की प्रॉब्लम है तो ये हर दिन करने वाला आसन. वापस आ जाइए. सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड पे करेंगे. नीज को उठाएंगे, अपने स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे जहां से आप बैठे, हाथ को पीछे लेकर जाएंगे, कोर पे शोल्डर के ऊपर से पीछे पुश कीजिए अपनी पूरी थाइस अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर. लेंथ करें अपनी थाइस को, कोर को अच्छे से एंगेज करके, then get back. अर्धमसलन आसन नहीं करेंगे. इसके बाद हम जो करेंगे वो है सेतु बंद सर्वांग आसन, which is also called a bridge pose. And I swear by this pose that ये सबसे बढ़िया पोज है अगर आपको घुटनों में पेन रहता है, कमर में दर्द रहता है. एक जैसे होता है ना, जस्ट बिकॉज कि आप चेयर्स में बहुत लंबा टाइम बैठते हैं 7 से 8 घंटे और आपको ऐसा लगता है कि एक बॉडी में हल्का सा पेन रहता है, आपके लोअर लेग्स में भी पेन रहता है और आपको ऐसा लगता है कि आपको कंफर्टेबल नहीं रहता है. ये पोज आप रात को करके सोइए. दोनों लेग अप द वॉल पोज एंड ब्रिज पोज, मैं दोनों पोज जो आपको अभी सिखाने वाली हूं. हाँ, बहुत सिंपल है. आपकी किसी भी जॉइंट पे इनका कोई प्रेशर नहीं. मतलब कमर दर्द है, घुटनों में दर्द है, एंकल में दर्द है, आप इस पोज को बहुत आराम से कर सकते हैं. एंड इट विल रियली हेल्प यू विद देम considering you are following it consistent. ये दो पोजेस आप खाली पेट ही करेंगे और सोने से पहले उठते एकदम से कर सकते हैं और बहुत फायदेमंद. तो इस पोज में करना क्या है, आपको मैट पे जाना है. मैट पे जाने के बाद आपको अपनी पूरी ब्रीथ की जो हड्डी, each and every vertebrae has to be on the mat. मतलब आर्च नहीं चाहिए, इस तरह से आर्च नहीं चाहिए बिल्कुल. कई बार क्या होता है कि हम अपनी कोर को ऐसे चेस्ट को खोल के मूव करते हैं और सोचते हैं कि इस तरह से हम अपने कोर मसल्स को एंगेज कर रहे हैं. बिल्कुल भी नहीं, हम इस तरह से अपने स्पाइन पे प्रेशर डालें. तो करना क्या है, कोर मसल्स को कैसे एंगेज करेंगे? योर कोर मसल्स विल बी एंगेज जब आप अपनी नाभि को अंदर स्क्वीज करते हुए स्पाइन को पूरा मैट पे लेकर आते. इस तरह से नहीं, बाहर की तरफ नहीं, अंदर. तो अपनी नाभि को अंदर की तरफ स्क्वीज कीजिए, कोर मसल्स को भी अंदर की तरफ स्क्वीज कीजिए, सभी मसल्स. तो अगर मैं अब आपको डायफ्रेगमेटिक ब्रीथिंग सिखाऊं तो इनहेल करिए, अपने दोनों हाथों को नाभि के ऊपर. इनहेल, fill up your belly with lot of oxygen. Exhale, मतलब
Your navel goes in and then pull up. So cave, like I said, cave. So your navel goes in and up. Again, inhale and exhale. That's exactly how you have to engage your core muscles. For the glute bridge pose, you have your knees aligned with your heels, your core engaged and your palms right here. So as you inhale, you're going to lift up. All the muscles squeezed in and slowly you will exhale out. Again, going back to the mat, automatically you will inhale and then as you exhale, slowly lift up. So the idea is you're exhaling, you're squeezing all your muscle. And as you are preparing, as you're going down, you're automatically inhaling back and up. So see what is happening in this pose. When you are up in a bridge pose, you don't really need to push it very high to begin with. You can just be here. Just lift your glutes, quads, calves. Can you see all these three major muscle groups are engaged? Your glutes are engaged, your quad muscles are engaged, your calf muscles are engaged. But your spine is rested. You are up on the power of 4. The moment this pressure goes, your spine will fall down. The moment your knees are absolutely relaxed, there is no pressure on the knees. You're not holding up on the power of the knees. You are holding up on the power of your muscles here. Same is with the ankles. So like I said, all your joints are relaxed, but all your muscles are working. So even if you hold it up here like for a minute, you will feel that how it all starts burning. Your glute starts burning, your quad starts burning. So anybody who feels that they cannot do squats, they cannot do lunges, they cannot do lower body workout, and it starts making them feel a lot of pain in the legs, this is how you have to start. A simple glute bridge pose and then breathing. Considering it is a day 1, so we're not pushing a lot. We're just doing a simple hold in a glute bridge pose and then we are bringing it back down. We'll add a lot of variations to glute bridges as we slowly progress further. Now let's start with the leg up the wall pose. So again a very basic pose. इस pose के लिए आप अपनी legs को ऊपर उठाएंगे, अपने पंजों को अंदर की तरफ लेकर आएंगे. But as you can see, my legs are straight. मतलब घुटनों को bend नहीं करना है. और लेकिन अगर किसी को पेन है तो अपने नीज को सॉफ्ट रखिए. ओके, आपके जो पंजे हैं वो अंदर की तरफ रहेंगे, ऊपर की तरफ नहीं. Squeezed in, your toes have to be squeezed in, core has to be engaged. और आपके दोनों हाथ आप साइड में रख सकते हैं, ऊपर रख सकते हैं, जिस तरह से आप रखना चाहें. और इस तरह के मूवमेंट में अगर आपको प्रेशर आ रहा है तो आप बॉल के साथ अपने ग्लूट्स को पूरा अलाइन कर सकते हैं. मतलब दीवार के साथ अपनी टांगों को रख सकते. होल्ड कीजिए इस पोज को 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट. रिलैक्स करेंगे अच्छे से और फिर वापस आ. हम ब्रीद आउट करते हैं. सिंपल स्पाइन ट्विस्ट करेंगे अगेन. ईगल लेग्स मतलब वन नी ओवर द अदर, स्क्वीज करते हुए एक साइड पे और आपने दूसरे हाथ को खोल के रखें. तो किस तरह की मूवमेंट है. अगेन आप देखिए जैसे आप कपड़ों को सुखाते हैं तो आप किस तरह से ट्विस्ट एंड टर्न करते हैं ना, एग्जैक्टली दैट. आप अपने पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को ट्विस्ट एंड टर्न करते हैं. सो इसमें आपके जितने भी मसल्स हैं टुवर्ड्स द सेंटर पार्ट, उनका अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है. प्लस आपकी जितनी भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है उनको एक बहुत ही सही किक स्टार्ट. सेम टू द अदर साइड. सेंटर में आते हुए आप ऑटोमेटिकली इनहेल करेंगे. लेग ओवर टू द अदर साइड. एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट टू द साइड. Squeeze and to the opposite side. अगर किसी को नेक में प्रॉब्लम है, like I said, शोल्डर्स में प्रॉब्लम है, तो अभी अपर बॉडी की तरफ बहुत ज्यादा स्क्वीज और लिफ्ट मत कीजिए. अपने हाथों को सिंपल सीधा रखें और सीधा लेग को भी देख सकते हैं. अगर आप कर सकते हैं तो आप लेग्स को एक साइड पे करेंगे और फेस को दूसरे साइड पे, मतलब कंप्लीट ट्विस्ट. And then back. Listen. I'll just share a music now. हम
2 मिनट के लिए शवासन में लेटेंगे, just relaxing ourselves, and that's how we'll end the session. So जैसे अभी हमने leg up the wall pose कुछ 30-40 seconds, आप leg up आराम से कर सकते हैं, almost like 3 minutes 4 minutes, और उसके बाद जब आप अपनी legs नीचे लेकर जाएंगे, then you will feel कि कैसे you can feel कि वो कैसे हर एक हर एक नर्व में वो ब्लड वापस आता है. You can feel that blood pumping back to the legs. It's a very beautiful way of understanding your entire system. कोशिश करके देखिएगा, it's very relaxing and definitely like I said कि आप जब पूरा दिन अपनी legs को hang करके chairs पे बैठते हैं, आपका sedentary lifestyle है, so this is an amazing way to kickstart your restoration.